अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा वही कॉन्सेप्ट है वो स्पोकन क्लास का कॉन्सेप्ट है और आई एम गोइंग टू शेयर यू सम बिगनिंग सेंटेंस। ये बिगनर सेंटेंस है भाई फॉर कन्वर्सेशंस के। अगर आप इसको अच्छी तरीके से जैसे आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ करोगे भाई, जैसे अगर मैं कहूँ इफ़ आई टॉक अबाउट माई करियर दैट्स आई हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल दिस मंथ, तो मैंने यूज़ किया इफ़ आई टॉक अबाउट। जैसे भी आप किसी के बारे में बात करें तो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ आई टॉक अबाउट। इसका मतलब होता है अगर मैं बात करता हूँ या करूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है टू बी ऑनेस्ट, यानी ईमानदारी से। टू बी ऑनेस्ट दैट्स यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब टू वॉच माई वीडियो। अगर हम बात करें भाई थर्ड सेंटेंस की, एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है कि भाई I have uploaded this video in morning time. यानी as far as I am concerned, there's the world facing a lot of problem in this world. And if we talk about this lecture today, it helps you a lot. चौथा सेंटेंस है in my opinion, कि मेरा ख्याल है in my opinion that students need a lot of practice to overcome all the related problem when they are going to speak. और फिफ्थ सेंटेंस है as per as my views, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जहाँ तक मेरा ख्याल है भाई, एज़ फार एज़ माई व्यूज़ द स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग हार्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज। वी हैव अनदर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू कॉल हिम एंड ही इज़ मेकिंग अ सेंटेंस। अख्तर, प्लीज़ कम हियर। So I'm going to make first sentence. I feel sure that you would like to definitely make a most use of these sentences, which you have already read on a whiteboard. So I'm going to make a first sentence that if I talk about my experience is so much momentous for everyone. And another sentence I'm going to make, to be honest. To be honest, my friends are lethargic. They are so much indolent. And third sentence, as far as I'm concerned, that education plays such a momentous role in our life. Fourth sentence, in my opinion, English language can bring great alter in your life. Fifth sentence, as per my views, everyone has to work hard to get ahead in his life. Thank you. Wonderful. And he was Akhtar. Have you seen that how he started his conversation, and he used all these beginning sentence for conversation. If you are going to speak anybody else and we are going to use these beginning sentence, it will help you to start your conversation. भाई ये हमारा सिंपल चैनल है और इस मंथ हमने इसे स्टार्ट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि भाई इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। और कभी कभी हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं, कभी कभी हमारा स्पोकन क्लास होता है। भाई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।